Okay, my face is something not new to you. Okay, beta. Chalo. So let me share the screen. Good morning, ma'am, from Bishnupur. Okay, good morning, good morning. Okay. So as you know, we have started our yes, we have started our classes, weekend classes from a I think it's been 4 weeks, right? So it's the fifth week for you, and we have continued with the principle of inheritance and variation को continue करना था, but I don't know why sir has asked me to do this chapter, so I'm doing this. Okay, so we will do the molecular basis of inheritance today. Okay, we are going to solve all the previous year questions. I want you to be 100% active and attentive. If you get any of the questions in between the session, make sure you ask me in the chat box. It will always be open. Okay. So when will you start the evolution chapter? Okay, Mahi Sagar, I think after this chapter, okay, molecular basis of inheritance, it is evolution only. Oh my God, what is happening? Okay. So ये chapter के बाद बेटा evolution ही आएगा. Don't worry. I know many of my students are quite, afraid of evolution. ये बेटा अब से नहीं, हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं. We have seen so many batches. I can definitely say that students get uncomfortable in these three chapters. Okay, principle of inheritance, molecular basis of inheritance, and evolution. कुछ बच्चों को evolution बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आता. See, it's all about the memory. Okay, it's a memory based concepts. एक बार याद रह गए तो रह गए बस. ठीक है. Okay, Mahi Sagar, after this chapter, we are going to start the evolution. Okay, chalo. So we are going to start now. Before getting into the concepts, let me launch the poll. Please tell me if I'm audible to you or not. Am I audible to you? Am I visible to you? Is the PPT visible to you? Yes, yes, yes. Okay. Chalo. Ha. First question. It is a question from 2019. Purines found both in DNA and RNA are. Okay. Options are cytosine and thymine, adenine and thymine, adenine and guanine, guanine and cytosine. Okay. So very easy question. Okay. So I'm going to launch the poll here. Please answer me in the poll. आप मुझे बेटा पोल में आंसर कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, चैट बॉक्स में आंसर देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बट फिर भी अगर पोल में भी आए, चैट में भी आए, तो इट्स अ गुड साइन, राइट? चलो, very good. I can see most of you are answering it correctly. I'm very happy to see that. Okay, you have been preparing. Hmm? Yes, good news. Okay, chalo beta. I can see most of you are answering it correctly. I'm ending the poll. I'm sharing the results with you. You can look at your screen. 90% of the students have chosen option C and 10% students have chosen as option D. जितने भी बच्चे डी ने चूज किया है बेटा, आई थिंक यू नीड टू लुक एट द ऑप्शंस वंस अगेन. ठीक है, एक बार और आप ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए, समझिए क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है. ओके, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बेटा, वी ऑल नो, राइट? तो यहाँ पे आप देख लीजिए बेटा, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, या फिर आप समझ लो न्यूक्लियोटाइड बेसिस. ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा, इफ यू सी द न्यूक्लियोटाइड्स, you will get the two categories, purines and pyrimidines. Purines have adenine and guanine. Pyrimidines have cytosine, okay, thymine, and in the case of RNA, it is uracil. ठीक है, that is pyrimidine. Purine में ये रहता है. Okay, you must be knowing this. Very easy question. ठीक है, चलो. So 3 is the answer for this question. Adenine and guanine are found in both RNA and DNA of purines. Okay, चलो, good, good. Next question. Okay, it's a NEET 2024 क्वेश्चन. ओके, 24 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन जो आपके सीनियर्स ने लिखा था. ओके, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 सेज फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ओके, एंड 2 के जेकब एंड मोनाड एक्सपेरिमेंट, एंड 3 हरगोबिन खुराना, डी मिसलसन एंड स्टॉल. लिस्ट 2 में बेटा जेनेटिक कोड है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ एरॉन. अगेन very easy question if you are clear with the concepts. Okay, very good Mahi Sagar, beautiful. Okay, अच्छा, this is not in the setting of everyone. अच्छा, आपको everyone को नहीं भेजना है, सिर्फ मुझे ही भेजना है. Wait, I'll edit here. Okay, to hosts only. Now सिर्फ मैं ही देखूंगी. ये everyone में क्या होता है ना, if one person has answered it in the chat box and if I say correct, then you will keep on repeating the same.
So now we have put it as directly. You will not see others. मुझे भेजोगे, सिर्फ मेरा और आपका कन्वर्सेशन रहेगा. Very good, Shimoga. Yes, North and what is this? Middle Andaman. Okay. रोशनी, बिष्णुपुर, तिनसुकिया, यानम, सिद्धिपेट. बेटा लुक एट द ऑप्शंस वंस अगेन. सिद्धिपेट. ओके. चलो, सो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओ बाप रे मैम, ये क्या लेके आए आप? ये बेटा सोल्यूशन है. आपको भी पता है, मुझे भी पता है. चलो देखते हैं. ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, बट देखते हैं. ओके. सो व्हाट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट? वी ऑल नो बेटा, इट्स द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. मतलब वहां पे वी हैड टॉक्ड अबाउट द स्मूथ, सॉफ्ट स्टेन, द स्मूथ वाला वन स्ट्रेन एंड द रफ स्ट्रेन. ओके. सो स्मूथ वाला जो है दैट इज विरुलेंट, रफ वन इज नॉन विरुलेंट. ओके. तो जब फ्रेडरिक ने एक्सपेरिमेंट किया तो व्हाट हैपेंड देयर, द स्मूथ स्ट्रेन, ओके, उसका जो डीएनए है वो में बना रहा है रफ स्ट्रेन. ओके, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब आर स्ट्रेन वाज सपोज टू बी यू नो safe, not harmful, but something is there, something is transforming from S and it is converting into R. So that is transforming principle. Even Frederick didn't know what is getting transferred or what is the change, but he had told that it is a transforming principle. S strain is converting into R. सॉरी, आर स्ट्रेन इज कन्वर्टिंग इनटू यस. ओके. चलो, तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा. जो नॉन विरुलेंट था वो विरुलेंट हो रहा है. ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ एस. वी ऑल नो दैट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज जेकब एंड मोनाड. ओके, जेकब एंड मोनाड ने बेटा लैक ओपेरॉन दिया है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट. ओके, जीन एक्सप्रेशंस. आई डोंट थिंक आपके सिलेबस में हुआ है ना, आपके स्कूल्स में हुआ है. इज दिस क्लियर इन योर स्कूल्स? ओके, दिस चैप्टर आई एम आस्किंग. So Lacoperon, Frederick Griffith experiment. Okay, चलो. तो बेटा लैकोपेरॉन इज गिवन बाय जेकब एंड मोनाड. तो इतना आपको पता होना चाहिए. ठीक है. एंड देन हर गोबिंद खुराना. ओके, ही इज वेरी वेल नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन जेनेटिक कोड एंड इट्स रोल इन फोटोसिंथेसिस. बेटा यू मस्ट नो दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है. ओके, जेनवी सेज यस, वेरी गुड. Okay, so Har Gobind Khurana, he has given the research on genetic code and protein synthesis. Okay, Francis, Jacob and Monad, they have given us their work on Lacoperon. Frederick Griffith, famous for transforming principle. Messelson and Stahl, it is very famous for the semi-conservative mode of DNA replication. ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो सेमी कंजर्वेटिव मोड में हो रहा है, इसको इन्होंने ही प्रूव किया था. ओके, वी ऑल नो दैट. आप लोगों ने उसको पढ़ा है. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. तो क्या हो रहा है? हाँ. तो अभी आप बता सकते हो बेटा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बताया था. ठीक है. सो जेकब एंड मोनाड हैड गिवन द लैक ओपेरॉन. ओके. Har Gobind Khurana, they have talked about the genetic code. Messerson and Stahl gave the semi-conservative mode of DNA replication. Hence, the answer for this question is B. Very clear, very simple. कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इट वाज सपोज्ड टू बी 3, राइट? ओके, होता है. ओके, चलो, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2022. Okay, which of the following statements is correct? You have to choose among these four statements which one is correct one. Adenine pairs with thymine through 2 hydrogen bonds. Adenine pairs with thymine through 1 hydrogen bond. Adenine pairs with thymine through 3 hydrogen bonds. Adenine does not pair with thymine. डी तो बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर है. ठीक है, बिकॉज यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यू आर वेरी वेल फेमिलियर दैट. ओके, सो नाइट्रोजन बेसिस में 4 होते हैं. एक ए टी जी सी. ओके, ए ऑलवेज बाइंड्स विथ टी. वेरी गुड, आई कैन सी मेनी ऑफ आर आंसरिंग इट करेक्टली. ए बाइंड्स विथ टी विद द डबल बॉन्ड. जी बाइंड्स विथ सी विद द ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ लो. ठीक है, म्यूट योरसेल्व्स. ओके, क्लास 12 जेन वी डन. हाँ, गुड. ओके, सो आई हैव म्यूटेड एवरीवन. ओके, चलो कोई बात नहीं. हाँ, सो दिस इज लाइक यूनिवर्सल रूल बेटा. एडेनाइन बाइंड्स विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड.
Guanine binds with cytosine with three hydrogen bonds. Okay. And now if you want to tell me, if I ask you, ma'am, affinity किसके बीच में ज्यादा होता है? Okay, A and T doesn't have that much of affinity compared to G and C. Because G and C with three bonds, they make a very strong couple. It's like a couple beta. A binds with T. Okay, it's a marriage between A, T, G, C के बीच में जो marriage है. तो इसमें आप बता सकते हो कि जी सी के बीच में बहुत गहरा प्यार है, एटी के बीच में है बट इतना ज्यादा नहीं. ठीक है. So if you look at these options, so here you can see adenine pairs with thymine through two hydrogen bonds. Okay, so the answer for this question is 1. Very easy. Okay, next question from NEET 2022. Read the following statements and choose the set of correct statements. ठीक है, कुछ statements हैं, आपको correct statement इसमें choose करना है. Euchromatin is loosely packed chromatin. Heterochromatin is transcriptionally active. नहीं, okay. It's not need to be answered. आपको बताना है. Histone octamer is wrapped by negatively charged DNA in nucleosome. Okay. Histones are rich in lysine and arginine. A typical nucleosome contains 400 base pair of DNA helix. Okay. So 1, 2, 3, 5 statements are there. You have to choose the correct. Okay. तो करेक्ट वन चूज करना है. बिल्कुल ठीक. जितने भी बच्चे आंसर किए थे ना लास्ट क्वेश्चन वाले, ऑल करेक्ट. ओके. जेनवी, विष्णुपुर, शिमोगा, तिनसुकिया, सब परफेक्ट. प्रिया लक्ष्मी, ऑसम. माहिसागर, ब्यूटीफुल. शिमोगा, कुडगू, सब ठीक. वेरी नाइस. ओके, इफ आई फॉरगेट टू टेक योर नेम, बेटा बीच बीच में वो निकल जाता है, तो अब बुरा मत मानना कि मैडम ने हमारे स्कूल का नाम नहीं लिया. सारे आप हमारे ही हैं. ओके. खोवाई, परफेक्ट. नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, ब्यूटीफुल. सिद्धपेट, परफेक्ट. यानम, ऑसम. ओके. खमाम, नाइस. ओके. तो सबने आंसर कर दिया. अभी देखते हैं हम लोग, बट आंसर 2 है, सबको पता था. ओके. So if you see here, euchromatin is loosely packed and it is transcriptionally active. Okay, if you see the structure of chromosome, you will find the two types of chromatin. Okay, जो euchromatin होता है, which is lightly, अब उसको बताओ कि lightly packed होता है या फिर loosely packed होता है. Transcriptionally active मतलब when the transcription process takes place, it takes place in the euchromatin region. ओके. एंड जब आप उसको स्टेन करोगे तो लाइट स्टेन लेगा वो. बट व्हेन वी टॉक अबाउट हेटेरोक्रोमैटिन, इट इज नॉट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. आप इसको ऐसे कह सकते हो, मतलब ऐसे कह सकते हो, या फिर आप इसको सेकेंड स्टेटमेंट में ये भी बता सकते हो. यहाँ पे क्या लिखा था, हेटेरोक्रोमैटिन को जब आप स्टेन करते हो तो डार्क स्टेन लेगा. ओके. So they take the dark stain. आपको ये पता होना चाहिए. And then there is a statement here. A typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix. तो ये बिल्कुल wrong statement है. ठीक है. So euchromatin is loosely packed chromatin. बिल्कुल सही है. ठीक है. And then heterochromatin is a transcriptionally active. No, it is not transcriptionally active. Histone octamer, हाँ definitely बेटा, जो हमारा octamer है histone का, okay, that is positively charged and DNA is negatively charged. It's very basic. Okay. And histones are rich in lysine and arginine. बिल्कुल सही. ठीक है. तो आपको करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं? A, C and then D are the correct statements. Apart from that, B and E are wrong. Hence answer for this question is 2. ओके. चलो, वेरी नाइस. आपको बेटा स्ट्रक्चर पता है ना, हिस्टोन का स्ट्रक्चर. एवरीबडी इज क्लियर विद दैट, राइट? ओके. यू विल फाइंड 2 H2A एंड H2B. यहाँ पे दिख रहा है आपको, H2A 2 होते हैं, H2B 2 होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे दिख रहा है. एंड H3 2, H4 2. इसमें एक होता है बेटा, दैट इज लिंकर डीएनए. लिंकर डीएनए के पास यहाँ पे भी एक रहता है. ओके. सो दैट इज H1. यहाँ पे भी आपको मिलेगा, दैट इज H1. ठीक है. सो हमारे ऑक्टोमर में जो H1 है वो जॉइंट नहीं रहता, वो मिलके नहीं रहता, वो अलग रहता है. ऑक्टोमर हैज H2A, H2B, H3 and H4, 2 in number. Okay, the H1 which connects with the linker DNA which acts like a door or a opening. Okay, तो generate, ma'am, can you generate option poll? Okay, no problem. सिद्धिपेट, I'll do that. मैं पोल लॉन्च करूंगी. ठीक है. चलो, तो दैट इज मच मोर better, I feel. Okay. So this is about the nucleosome. You all know. Now, what is nucleosome? Nucleosome is a structure which is called as, okay, beads on string. Okay, आप जब एक मणि का माला देखते हो कि मोती जैसे पिरोया जाता है एक धागे में, so that is beads on string structure. Okay, so I think that is very familiar to you. Now,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, नीट 2020 का क्वेश्चन है, डायरेक्टली गिवन फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pairs is 0.34 nanometer and total number of base pairs of DNA double helix is a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power of 9 base pairs, then the length of DNA is approximately what? ये आपको बताना है. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. I can see most of you are answering it correctly in the chat box. I'm launched the poll, okay, because Siddharpet has requested me to launch the poll. I'm launching the poll. ठीक है बेटा, you have to put the formula here. Okay, formula लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. So length of the DNA is equal to number of base pairs into distance between two consecutive base pairs. Okay, if you put the formula, length of the DNA is equal to number of base pairs, okay, into distance between two consecutive base pairs. You will get it. Very good, everyone. JNV North, Middle Andaman, perfect. JNV, perfect. Kurnool, Khammam, YSK. YSK कहाँ है बेटा? Can you tell me? मतलब YSK का full form? JNV YSK, perfect. Your answer is correct. Yanam, Khowai, good, good. Mahisagar, good, good. शिमोगा, हाँ सब ठीक है बेटा, सब ठीक. ओके, चलो. So you all know that answer for this question is C. 95% students have answered it correctly. You can share, you can see the result which I have shared now. 95% have chosen option C. सिर्फ एक बच्चे ने 2 मीटर चूज किया है बेटा. 2 मीटर नहीं होता है, 2.2 मीटर होता है. ओके, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इन द पेज नंबर 99. ओके, 99 में आप देखिए सेकेंड पैराग्राफ, विल गेट इट. ओके, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2020. Okay, 2.2 meters. Clear? Sure. So sixth question, the final proof for DNA as the genetic material came from the experiments of option R, Griffith, Hershey and Chase, Ever, McLeod and McCarthy, Messelson and Stock. अच्छा, स्टॉक नहीं है ये. ओके, यहाँ पे हेच आना चाहिए. स्टॉक में है, स्टॉल. स्टॉल एक्सपेरिमेंट है, स्टॉक में. ओके, so you can choose the options. Perfect. Perfect. Kurnool, Shimoga, Andaman. Come on, beta, look at the options once again. सब अच्छा, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी. आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग. सी फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मेट. क्यों सब लोग रॉन्ग चूज कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा. हाँ, सिद्धिपेट इज आस्किंग ऑप्शन पोल. ओके, लो बेटा ऑप्शन पोल. सिद्धिपेट लव्स आंसरिंग इन पोल. कोल्हापुर. ओके, हाँ, अभी लोग ठीक हो गए. आंसरिंग करेक्टली. ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड द पोल नाउ. यार जो बच्चे सी चूज कर रहे हैं ना, थोड़ा सोचो बेटा. थिंक अबाउट इट वंस अगेन. Okay, I'm ending the poll. I'm sharing the results. If you see, 81% students have chosen option B, and 10% people have chosen option C. 6% students have chosen option A, and एक बच्चे ने D भी choose किया है, जो बिल्कुल out of context है. ठीक है? हाँ. So if you see here, yes, Nalgonda, now you are correct. Okay, so there are 3 experiments. Okay, if you see, okay, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, search for genetic material. Okay, search for genetic material. In that heading, you will find the 3 experiments: Griffith's experiment, okay, McLeod McCarthy experiment, and the Hershey and Chase experiment. Okay, McLeod McCarthy ने बेटा proof किया था. Okay, they had given the proof, they did the biochemical testing and everything, but still many of the scientists and people were not convinced. उनको लगता था कि शायद प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. लेकिन हर्शी एंड चेज ने जो बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करके जो एक्सपेरिमेंट किया था, दैट गेव द फाइनल प्रूफ. मतलब उस एक्सपेरिमेंट के बाद सब लोग कन्विंस हो गए कि हाँ भाई, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए ओनली बट नॉट प्रोटीन.
ठीक है, आपको सबको पता है एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज होता है। ओके, तो सल्फर, फास्फोरस, एवरीथिंग यू आर फेमिलियर, उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, वेरी इजी क्वेश्चन, टू इज द आंसर। ओके, सो फाइनल प्रूफ वाज गिवन बाय हर्षी एंड चेज। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2018। The experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in, सोचो सोचो, Messelson and Stoll experiment, if you remember. Okay, very good, Mahi Sagar, Shimuga, Priyu Lakshmi, Roshni. Nice, 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 Mahi Sagar. सब ठीक, सब ठीक। वेरी गुड, ई कोलाई, वेरी गुड, एस्चेरिशिया कोलाई। ओके सिद्धिपेट बेटा, लुक एट द ऑप्शंस वंस अगेन। आप ऑप्शंस को एक बार और देखिए, और मीनवाइल आई हैव लॉन्च द पोल, यू कैन आंसर इन द पोल। ओके बेटा, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन थोड़ा याद कीजिए, क्या हुआ था। ओके, तो इफ यू लुक एट द एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी में ये डायग्राम देखो, दिस मेसर्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। तो ये कैसे हुआ था भाई, ई कोलाई को लिए थे ना हमने, वायरस को लिया था क्या। ओके, अभी जिन बच्चों को नहीं पता है कि ई कोलाई कहाँ को बिलोंग करता है, बेटा ई कोलाई बिलोंग्स टू बैक्टीरिया, एस्चेरिशिया कोलाई इज अ बैक्टीरिया। आई एम एंडिंग द पोल, यू कैन सी द रिजल्ट्स। मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, 88%। ओके, चलो, आई एम एंडिंग द पोल। हाँ, so beta, you can clearly understand that this experimental proof which was given by Messerson and Stoll, they used the bacterium. ओके, बैक्टीरियम को यूज किया है इन्होंने, एंड देखा है कि कितने जनरेशन्स में कैसे कैसे हमको रेप्लिकेशन हो रहा है। Okay, so there was chances, okay, people were thinking that it might be a totally conservative, it might be semi-conservative or disruptive. So in तीनों के options रख के they have done the experiment and they can confirm that it is a semi-conservative. That means if a parent strand is there, with the help of parent strand, a new strand is formed. Okay, so one strand is a parental strand, which we call it as a template, and the new strand is the one which is formed after replication. So this kind of replication is a semi-conservative, which is seen in the Escherichia coli, that is a bacterium. Okay, वो bacterium में देखा गया था। ठीक है, very easy question. Ma'am, is there any virus which contain both DNA and RNA? No, Gadak. Why, virus has either RNA or DNA, but never both. This is a statement of NCRT. If you open the chapter of biological classification, okay, जहाँ पे prions, virus and viroids है ना, वहां पे उन्होंने क्लियरली दिया है, वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। ओके, अगर एक्सेप्शन कहीं भी है भी तो हमको नहीं जानना है, क्यों, बिकॉज एनसीईआरटी ने उसको हटा दिया है, नेवर बोथ। एनसीईआरटी के बेसिस पे हमको चलना होता है। ठीक है, चलो, सो टू इज द आंसर, विच इज मिसलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ओके, हाँ, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज। ओके, during replication, Okazaki fragments are used to elongate. It is a question of 2017. Leading strand towards replication fork, lagging strand towards replication fork, leading strand away from replication fork, lagging strand away from a replication fork. So, you have to tell me the answer. I have already received the answers. Okay, कुछ बच्चे कह रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी इसके बारे में, I will simply launch the poll. Siddharth, good. I'm launching the poll. Answer in the poll. बेटा आपको पता होना चाहिए, ओके। सो 3' to 5' जा रहा है, 5' to 3' जा रहा है, कौन सा कहां से होता है, ऑलवेज रिमेंबर कि रेप्लिकेशन और द पॉलीमराइजेशन अकर्स फ्रॉम 3' to 5'। हाँ, अब देख लो, if you see this diagram, okay, you can see here the strand which synthesized in the leading strand is 3' to 5' direction is the leading strand. ये आपको पता होना चाहिए। Polymerization always, it is a universal rule, occurs from 3' to 5' direction.
ओके, अब यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है इन द लीड लैगिंग स्ट्रैंड दैट अकर्स। यहाँ पे देखो तुम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5'2'3, 5'2'3, 5'2'3, अब ऐसा लग रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में तुम देख लो, यहाँ पे बीच बीच में गैप्स हो रहा है। ओके, देर आर गैप्स फॉर्म्ड एंड दोज गैप्स आर कॉल्ड एज उन गैप्स को आके जब निकलता है तो दैट इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओके, सो यहाँ पे देख लिया आपने, स्ट्रैंड विच इज synthesized in 3' to 5' direction is a leading strand. The strand which is synthesized in the opposite direction is a lagging strand which contains Okazaki fragments. This fragment is synthesized away from the replication fork. So this is replication fork. अभी यहाँ को आप समझ सकते हो कि replication fork ये away जा रहा है, मतलब it is moving away from the replication fork. Okay. So hence answer for this question is D. जितने बच्चों ने भी D आंसर किया है that is the correct answer. ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए 5'to 3', 5'to 3', इट्स एन एंटी पैरेलल पोलैरिटी, किधर क्या आता है, कैसे क्या होता है, सब पता होना चाहिए। इतने आपने अभी पढ़ लिया है तो आई होप यू आर ऑल क्लियर विद दैट। इसमें कोई डाउट्स तो नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना? इज देयर एनी डाउट हियर, एनीबडी? ओके, which of the following RNAs should be most abundant in animal cell? This is a question from 18. Please take your time and try to answer the question. I'm going to launch the poll meanwhile. Okay. I have given enough time here. I'm ending the poll. यार मुझे एक ताज्जुब हो रहा है. I'm getting yeah, I'm not visible because I turn off my video. Now am I visible? Okay. So I have launched the poll. I'm sharing the result. 50% of the students have chosen option C. Okay, wait. बेटा आप ना, मैं यहाँ पे एक चीज गलत बोली. I thought any of my students will rectify, but nobody rectified me. Why is that? I was kept telling you that the polymerization always occur from 3' to 5' end. It is opposite, right? किसी ने भी मुझे करेक्ट नहीं किया. मैं इतना टाइम तक वेट की. एंड यार, पॉलीमराइजेशन अकर्स फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन. यहाँ पे चार्ट में भी लिखा है, देखो, इट इज अकरिंग फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन. ठीक है, तो इतना मैंने बताया, मैंने आपने गलती पकड़ी नहीं. इसका मतलब है आप अटेंटिव नहीं हो क्लास में. इसका रीजन भी है. ओके, आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा, whenever polymerization occurs from 5' to 3' डायरेक्शन, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन इन दिस डायरेक्शन ओनली. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3' में जो OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप को आके दूसरा जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो आके बाइंड करता है. ठीक है, वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड करता है. इधर इट माइट बी एडेनाइन, थायमिन, C और G. ओके, तो ग्वानिन कोई भी आके ज्वाइन करेगा तो 3 के रीजन में आके ज्वाइन करता है. ठीक है, तो ऐसे करके पॉलीमराइजेशन का जो रेप्लिकेशन जो होता है, सिंथेसिस, वो ऐसे होता है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड नॉट करेक्ट मी. चलो, अभी तो क्लियर है ना? The polymerization or the synthesis of any strand occurs from 5' to 3' direction. ओके, तो मैंने एक टेस्ट लिया, आप टेस्ट में गलत हो गए. नो बडी इज अटेंटिव. चलो कोई बात नहीं. हाँ, अभी 9 का आंसर देखते हैं बेटा. राइबोसोमल आरएनए ऑल्सो कॉल्ड एज rRNA प्रोवाइड्स द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, जो हमारा राइबोसोमल आरएनए है, इट इज द मेन स्ट्रक्चर और द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. It forms 80% of the total DNA content of the cell and hence the most abundant RNA.
ओके, मोस्ट अबंडेंट आरएनए है बेटा। जिन लोगों ने भी सी चूज किया है बेटा, यू आर रॉन्ग। इट इज नॉट द mRNA, मैसेंजर आरएनए नहीं है। ओके, आपने पढ़ा बहुत है मैसेंजर के बारे में, आई टोटली एग्री विद दैट। ओके, व्हेन ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होता है, ओके, एमआरएन जो एमआरएनए है वो डीएनए का कोडेड इंफॉर्मेशन को डिकोड करके ट्रांसक्रिप्शन होता है, एवरीथिंग इज करेक्ट। बट एमआरएनए इज नॉट अबंडेंट इन द नेचर, आरआरएनए इज अबंडेंट। ठीक है, चलो क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। अरे फिर सेम टाइप का क्वेश्चन, बट दिस इज आस्क्ड इन 2018। जो मैंने पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछा वो 2024 का था। देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर थोड़ा भी कंफर्मेशन आपको यहाँ पे डिफिकल्ट लगता है तो यार एनसीईआरटी को पहले पढ़ो। ओके, कुछ बच्चे होते हैं कि मैम मैं मोटी मोटी किताब पढ़ता हूँ, मैं वो पढ़ूंगा, मैं इधर पढ़ूंगा उधर पढ़ूंगा, यार एनसीईआरटी इज द बेस। एनसीईआरटी को पहले अच्छे से पढ़ो, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट, एंड देन यू गो फॉर द अदर बुक्स। ओके, एलेक जेफरी, हर्शी एंड चेस, जेकब एंड मोनाड, मिसरसन एंड स्टॉल। Okay, you have to choose the correct match. I can see most of you are answering it very good, correctly. Karnool, perfect. Bishnupur, Roshni, nice. Nalgonda, perfect. Siddipet, good. Tinsukia, तिनसुकिया बेटा आपको एक बार और देखना पड़ेगा। मिसरसन एंड स्टॉल इज नॉट डन बाय पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इज अ गार्डन पी। वो गार्डन पी आप देखते हो ना, मटर, मटर होता है वो। Okay, so Mrs. Install is took the help of bacteria. Just now we solved a question. Priya Lakshmi, perfect. Okay, North Mid Andaman, good. Shimoga, good. Okay, सब ठीक है। ओके, यस। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा, इफ यू सी एलेक जेफरी, यहाँ पे देख लो तुम। जेकब एंड मोनाड proposed मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन, ओके, नोन एज लैक ओपेरॉन। सी जो लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये आपके लिए सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है, जैसे ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। ओके, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन भी है। ओके, देर आर सो मेनी थिंग्स, बट आपको इतना है सिलेबस में, तो यू जस्ट नो दिस मच। And then Alec Jeffrey has given the DNA fingerprinting technique. Okay, he has given the fingerprinting technique. You remember? Okay, gene mapping, genome mapping. वहां पे हम लोग देखते हैं इसको, एलेक जेफरी का नाम वहां पे आता है। Messerschmitt Stahl has proved the semi-conservative DNA replication in E. coli. Okay, not in Pisum sativum. Somebody has answered. वो फास्ट फास्ट मूव हो रहा है चार्ट, तो मैं भूल गई। Okay, Alfred Hershey and Chase has given the proof for genetic material is a DNA. Okay, so answer for this question is C. Everybody has answered it correctly except few, and I hope they are clear with that now. Okay, complete the flow chart on central dogma. So central dogma, in every human being central dogma occurs. सारे ही लाइफ फॉर्म्स में सेंट्रल डॉगमा होता है। सो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा? You have to choose. You have to tell me A, B, C, and D. Very easy question. Again, asked in 2021. 21 का क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड। जेएनवीएल, तिनसुकिया, कलबुर्गी, एंड हु इज दिस, खमाम, कर्नूल, कोल्हापुर, पोल। ओके, लेपाक्षी। ओके बेटा, पोल पोल, आई एम लॉन्चिंग द पोल। मैं भूल जाती हूँ यार पोल बार बार। गुड लेपाक्षी, परफेक्ट। Who is this? Who is this? Yeske, beautiful. Khowai, nice. Shimoga, perfect. हाँ, ये कौन है? लाइशराम, सिंसिलिया देवी, गुड। चलो सब सब ठीक है, एवरीबडी इज करेक्ट। यानम, या नालगुंडा, नालगुंडा। लुक एट द ऑप्शंस वंस अगेन। ये ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं है, जो ये है वो ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं है। माइक्रो आरएनए, कुरनूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mRNA? माइक्रो आरएनए। ओके, बहुत टाइप के आरएनए है बेटा, बहुत। एसएन आरएनए, ओके, एसएन आरएनए होता है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, देयर आर लिटरली मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए। बट आपकी जो आप पढ़ते हो ना बेटा, आपकी एनसीईआरटी हो गया, आप दूसरे जो बच्चे पढ़ते हैं, वो सिर्फ तीन ही आरएनए वो दिखाते हैं, एक एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। बट देयर आर अदर्स, जैसे अभी अभी आपने बोला एमआईआरएनए, एसएन आरएनए। ओके, देयर आर सो मेनी, उनके फंक्शंस होते हैं बेटा डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। कि माइक्रो आरएनए कर लो। ओके, हाँ। तो नलगोंडा, नाउ यू आर करेक्ट। श्वेता, ब्यूटिफुल।
ओके चलो अभी मैं थोड़ा अभी देखते हैं। आई हैव एंडेड द पोल। 90% स्टूडेंट्स हैव चूजन ऑप्शन सी विच इज अ करेक्ट आंसर। तो अभी मैं रिजल्ट शेयर नहीं कर रही हूँ। तो इफ यू सी हियर, this is a central dogma. DNA is getting replicated again and again. From DNA, transcription will happen to give the mRNA. ओके जो mRNA है वो ट्रांसक्रिप्ट करेगा टू फॉर्म, सॉरी डीआरएनए से mRNA बनेगा। ओके सो बिकॉज डीएनए हैज द कोडेड इंफॉर्मेशन विच बाय विच जो डीएनए है वो काम नहीं कर सकता, आगे तक नहीं जा सकता, बट एमआरएनए कैन। तो एमआरएनए आएगा जो कोडेड इंफॉर्मेशन है डीएनए में वो डिकोड करेगा और न्यूक्लियस से बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाके ट्रांसलेशन करेगा। ओके ट्रांसलेशन प्रोसेस में हमको अल्टीमेटली वी गेट द प्रोटीन। ओके सो दिस प्रोटीन इज द वन विच विल गिव द एक्सप्रेशंस इन अवर बॉडी, आइदर बी इट एनी मेटाबॉलिक एक्सप्रेशंस या फिर कोई फिजिकल देखने में कोई एक्सप्रेशन। मतलब आप समझते हो ना बेटा, आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके जब फिर मैंने जीनोफाइटिक में बता नहीं रही हूँ। ओके जो फिजिकल होते हैं वो बता रही हूँ। ओके फिनोटिपिक। Clear? Okay. So three is the answer here. Formation of DNA from DNA is replication. mRNA from DNA is transcription. Protein from mRNA is translation. Okay, what is transduction? They have given transduction, right? So transduction is a type of bacterial reproduction जिसमें क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके अब समझ लो हमने पढ़ा है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट विच इज टेकन द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। ओके बैक्टीरियोफेज को अलो करते हैं इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरियम में। ओके सो दिस जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज विल बी मूव्ड इनटू द बैक्टीरिया। ओके सो दिस टाइप ऑफ इंफेक्शन डन बाय बैक्टीरियोफेज टू द बैक्टीरिया इज अ ट्रांसडक्शन। ओके ये ट्रांसडक्शन है। क्लियर? तो बैक्टीरिया में बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके ट्रांसफॉर्मेशन एंड द कॉन्जुगेशन। ओके बेटा यू हैव स्टडीड इन द 11th क्लास राइट, बैक्टीरिया हैज फिम्ब्रिया एंड पिल्लाई। ओके फिम्ब्रिया वर हेल्पिंग इन द अटैचमेंट। ओके जो फिम्ब्रे है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करता है। बट जो पिल्लाई है, ओके पिल्लाई विल हेल्प इन द मेकिंग ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। जैसे दो बैक्टीरिया है, एक को प्लस कंसिडर करो दूसरे को माइनस कंसिडर करो, तो दो बैक्टीरिया क्या करेंगे, थ्रू द पिल्लाई दे विल मेक अ पिलिफेरस ट्यूब। ओके ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब क्या होगा, इसमें प्लास्मिड होगा। ओके सो यहाँ पे प्लास्मिड होता है, तो इन प्लास्मिड्स में आपको पता है कि ओके सो ये जो सर्कुलर ओके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लास्मिड है, इसमें जो एक ऐसे जाएगा ये इधर जाके ये बनाएगा। नाउ दिस वन स्ट्रैंड विल मेक द अनदर। ओके ये दूसरा बनाएगा, और जो डोनेट कर रहा है उसको हम प्लस कहते हैं, जो रिसीव कर रहा है उसको माइनस कहते हैं। ओके दिस इज द कॉन्जुगेशन, बट आपके सिलेबस में अभी 12th में तो नहीं है बट 11th में है। सो जस्ट आई गिव यू इन्फॉर्मेशन। Okay, so answer for this question is A replication, B transcription, C translation, and D is protein. That is 3. Okay, next question. A transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions in DNA. These are with respect to upstream, downstream end. आपको पता होना चाहिए upstream, downstream, ठीक है? तो नीट 2024 का क्वेश्चन है बेटा, इंड्यूसर, रेप्रेसर एंड द स्ट्रक्चरल जीन, promoter structural gene terminator, repressor operator gene structural gene, okay structural gene transposons and the operating gene। okay बेटा यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट सब कुछ सुना है एक्सेप्ट ट्रांसपोजॉन्स आई गेस। ओके ट्रांसपोजॉन्स आर कॉल्ड एज जंपिंग जीन्स। ओके मुझे नहीं लगता कि आपने ट्रांसपोजॉन्स के बारे में सुना होगा, बट यू विल स्टडी दैट इन द बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। ओके ट्रांसपोजॉन्स आर कॉल्ड एज जंपिंग जीन्स, दे आर हेल्पफुल। ओके तो उनको एज अ होस्ट भी कई बार हम लोग यूज करते हैं इन द बायोटेक्नोलॉजी। ओके ओके सो ओनली वन पर्सन हैज आंसर टिल नाउ। आई थिंक केएसडी इज अ कासरगोड राइट। ओके कासरगोड ने आंसर किया है, बाकी वालों ने नहीं किया मुझे ऐसा लगता है, बट कासरगोड का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है चलो अब देखो बेटा, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम। A transcription unit is a segment of DNA that takes part in transcription। क्या है यार, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट उसको कहते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है यार, ये तो कॉमन है। बट इट हैज 3 कंपोनेंट्स, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर। ये प्रोमोटर है। ओके प्रोमोटर इज द वन वेयर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन स्टार्ट्स। ओके जो ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनता है आर डीएनए से, तो
वो आपको पता होना चाहिए. इट स्टार्ट्स इन द प्रोमोटर, एंड्स इन द टर्मिनेटर. एंड जो ट्रांसक्राइब होता है, जो रीजन ट्रांसक्राइब होता है, मतलब डीएनए से जो आपको आरएनए बनता है, एमआरएनए, वो जो स्ट्रैंड है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन. ओके, इसमें अगेन आते हैं बेटा बहुत सारे चीजें, जैसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, आप जो ट्रांसक्रिप्शन में देखते हो बेटा, इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है बेटा. आरएनए पॉलीमरेज कब आता है? अगर आरएनए बनाना है तो. इन ट्रांसक्रिप्शन आरएनए सिंथेसाइज्ड, तो आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमराइज आएगा. आरएनए पॉलीमराइज किसकी हेल्प से आरएनए बनाता है? डीएनए के हेल्प से. Okay, DNA is a template. So here, that's why you must remember that DNA dependent RNA polymerase. ये enzymes के types होते हैं. I hope you have read it somewhere. तो याद रखो. Okay, चलो. So 2 is the answer बेटा. So promoter होगा, structural gene होगा, and the terminator होगा. So transcription unit in DNA is defined primarily by these 3 regions. Okay. चलो next question. Which of the following RNAs is not required for protein synthesis? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत नहीं है? यू रिमेम्बर मैंने आपको बोला था एसआई आरएनए भी होता है. चलो, वेरी इजी क्वेश्चन. आई वांट एवरीवन टू आंसर हियर. आई लॉन्च द पोल. मैं पोल लॉन्च करती हूँ. यस, आई हैव लॉन्च द पोल. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 21. ओके, गुड गुड. चलो, आई एम एंडिंग द पोल. So 92% students have chosen option D, and only 8% students have chosen option C. Okay, चलो. So अभी हम देखते हैं बेटा what is the answer. So SI is a smaller interference RNA that is involved in the preventing, okay, in preventing the translation of mRNA to form protein. देखो, आपको पता होना चाहिए कौन प्रमोट कर रहा है, कौन हिंडर कर रहा है प्रोसेस को. Okay, so it is a inhibitor. siRNA is an inhibitor, or you can say it is preventing the translation of mRNA to form protein. It is associated with pest resistance in plants by RNA interference. Okay, so अभी आपको समझ में नहीं आएगा what is RNA interference when your sir will teach you. अगर पुणे के रीजन के बच्चे हैं तो मैं पढ़ाऊंगी. तो RNA interference बेटा बायोटेक्नोलॉजी में आके पढ़ोगे. पेस्ट रेजिस्टेंस, ओके, वहां पे हम लोग साइलेंसिंग करते हैं. ओके, साइलेंसिंग विद द हेल्प ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस. बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड जो क्वेश्चन चैप्टर है वहां पे पढ़ोगे. अभी तुम इतना जान लो, siRNA इज नॉट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ओके, एमआरएनए बिल्कुल इन्वॉल्व होता है क्योंकि प्रोटीन बनता ही एमआरएनए से है. राइबोसोमल आरएनए इज नीडेड. ओके, टीआरएनए इज ऑल्सो नीडेड. ओके, तो एमआरएनए होता है, एमआरएनए का एक पूरा लाइन होता है, उसमें हमारे स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट होते हैं. ओके, दैट इज राइबोसोमल आरएनए के स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट. इसमें आके टीआरएनए विल ब्रिंग द अमीनो एसिड. टीआरएनए अमीनो एसिड लाके सिंथेसाइज करता है प्रोटीन का. एक एक अमीनो एसिड जमते 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 वी गेट द प्रोटीन. ओके, सो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इजी वन. What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? See, there are many types of polymerase enzymes. I told you, right? RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, 3, even DNA polymerases are in variety. Okay, DNA polymerase में alpha, beta, gamma, there are literally many polymerase enzymes. But आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपके सिलेबस में 1 and 3 are commonly found. Okay, RNA polymerase 1 and 3 are very commonly found. You will see that in the replication process and in the transcription process. Okay, you will come across these. मैंने आपको अभी भी बताया, just now I told you. Okay, transcription occurs with the help of RNA polymerase, because RNA polymerase is the one that synthesizes the mRNA. Okay, so mRNA from DNA. तो अभी आप देख लो, transcribes rRNA, transcribes tRNA, transcribes precursor mRNA, transcribes only snRNA. तो बेटा इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. तो यहाँ पे आप देख लो, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए, एसएनआरएनए, 5s RNA एंड देन अगेन. ओके,
So RNA polymerase 1 transcribes 5.8S, 18S, 28S. RNA polymerase 2 transcribes hnRNA, which is a precursor of mRNA. तो जिन बच्चों ने चूज किया है एज ऑप्शन सी, बेटा आई एम वेरी दिल पे पत्थर रख के बोल रही हूँ कि आप गलत हो, क्योंकि आप जो बताए थे ना कि प्रिकर्सर एमआरएनए से ट्रांसक्राइब होता है, नो यार, नो। ओके, तो उसका आंसर जो देखो आप, आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है वो काम। ओके, आरएनए पॉलीमरेज 2, बट हियर दे आर आस्किंग अबाउट आरएनए पॉलीमरेज 3। ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए वी हैव द आंसर दैट इज ऑप्शन 2, ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए, ओके, एफएसआरएनए एंड देन एसएनआरएनए। बेटा ये आपको मैं एक बात बताती हूँ, ठीक है? आप ना डरिए मत, आप मैम ये तो हमने पढ़ाई नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, टेंशन मत लो, बिकॉज दिस इज अ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, दे आर नॉट आस्किंग यू अबाउट द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। Okay, prokaryotic transcription and translation is bit different, and eukaryotic transcription and translation is different. What we teach in your syllabus, it is a prokaryotic. तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैम हमने एस एस आर एन ए तो कभी सुना ही नहीं, एस एन आर एन ए तो कभी सुना ही नहीं, बेटा यूकैरियोट्स का होता है। ठीक है, तो यूजुअली ये पहले पूछा जाता था, बट अब इतना नहीं पूछा जाता है, जस्ट नो दैट कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, बट हम लोग जब वीकडे के क्लासेस में लेते हैं बेटा, वहां पे समझाते हैं इसको, तो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। ओके, विनय सर विल टीच यू। जिन बच्चों हैदराबाद रीजन में शिलांग में है, फॉर देम विनय विल टीच, पुणे रीजन के बच्चों को मैं समझाऊंगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2021। Okay, so in capping, methyl guanosine triphosphate is added at the 3' end of hnRNA. hnRNA is an heterogeneous RNA. Okay, आपको पता होना चाहिए। RNA polymerase binds with rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. The coding strand in the transcription unit is copied to an mRNA. Split gene arrangement is characteristic of prokaryote. किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे। सी बेटा, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, ओके, जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में बेटा एक होता है इमेच्योर एमआरएनए, एक होता है जो हमको मिलता है, दूसरा होता है मेच्योर आरएनए। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, इमेच्योर आरएनए को हमने मेच्योर आरएनए बनाना होता है। So how we are going to make that immature is called as hnRNA, mature one is the mature mRNA. So to make the mature mRNA, we will do some processes like capping, tailing and then splicing. तो splicing में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख लो बेटा, जो इंट्रॉन्स है उनको रिमूव किया जाता है। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स आर रिमूव so that only exons are remaining. Why only exons are remained? Because exons are the one which is transcriptionally active and they will help in the making of protein. Introns will only hinder the process in the making of protein. Hence, we will remove the introns by splicing. What is capping? बट आप कैपिंग में यहाँ पे देख सकते हो, एट द 5' रीजन आप यहाँ पे मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करोगे, दैट इज कैपिंग। देन व्हाट इज टेलिंग? बेटा टेलिंग में क्या होता है, वी ऐड पॉली ए टेल। पॉली ए टेल मतलब एडेनोसिन को आपने बार बार ऐड किया। ओके, ओनली एडेनोसिन हैज बीन एडेड to the 3' region, that is called as tailing. It makes the polyadenylation. Okay, so here you can see RNA polymerase binds with rho factor to terminate the process. Okay, initiate होता है promoter से। In the even promoter you might have studied about the Tata box. Okay, आपके स्कूल में बताया होगा। ओके, तो टाटा बॉक्स कहते हैं उसको। तो प्रोमोटर रीजन में स्टार्ट होता है, क्योंकि उसका जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो टाटा होता है, TA T AA। ओके, एंड देन एंड्स विद द टर्मिनेटर। टर्मिनेटर में आके दो टाइप का टर्मिनेशन होता है, वन इज रो डिपेंडेंट, अनदर वन इज रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट में रो फैक्टर विल कम। ओके, इन द रो इंडिपेंडेंट वहां पे क्या होता है बेटा, इट मेक्स अ हेयर पिन लूप शेप। हेयरपिन लूप शेप का एक स्ट्रक्चर होता है एंड देन इट इवेंचुअली गेट्स सेपरेटेड। ठीक है, अब इस ऑप्शन में इफ यू सी हियर which is the correct statement, RNA polymerase binds with the rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. This is correct statement. Okay, ये correct statement है। Okay, तो यहाँ पे देखो, in capping the methyl guanosine triphosphate is added at the 3' end. No, it is added at the 5' end. अभी भी मैंने बताया ना आपको, देखो कैपिंग होती है बट 5' end में होती है। The coding strand in transcription unit is copied to an mRNA
No. Okay. Split gene arrangement is characteristic of prokaryote? Definitely not. It is a characteristic of eukaryote. ओके सो ये यूकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक है बिकॉज आई टोल्ड यू राइट स्प्लिट जीन्स मतलब क्या देखो यहाँ पे बेटा इसके बहुत अंदर अंदर जाओगे तो डिटेल्स बहुत मिलेंगे बट इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है ठीक है सो स्प्लिट जीन्स के बारे में आप आगे चल के पढ़ोगे बट हियर इफ यू सी हियर ओनली इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स आर प्रेजेंट इंट्रॉन्स आर रिमूव सो दैट एक्सॉन्स आर रिमेन्ड ओके तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में तो ये बिल्कुल नहीं होता सिर्फ यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेगा इवन द एचएनआरएनए टू एमआरएनए का ट्रांसफर ओके सो हियर करेक्ट स्टेटमेंट इज टू चलो इजी क्वेश्चन था इतना डिफिकल्ट नहीं सो इट्स अ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास ऑलरेडी 12 हो गया आई डोंट वांट टू डिले बिकॉज वी हैव अदर क्लासेस DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequences. It is a 2021 question. Satellite DNA, repetitive DNA, single nucleotide and polymorphic DNA. Okay, बेटा यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं. You can expect questions from this area. Very good. Very good, Roshni. Karnool. नहीं बेटा Karnool. You have to look at the options once again. Repetitive DNA. If you remember, okay, repetitive, tandem repeats. ओके सो सैटेलाइट वाले जो होते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए तो यहाँ पे देख लो आई विल टेल यू हियर सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए okay these are called as repetitive tandems or फिर tandem repeats okay definitely it will be there okay that makes the differences in the individual and the basis of DNA fingerprinting is called as VNTR. Okay, a satellite DNA as a probe that shows high degree of polymorphism. Polymorphism is the variation at genetic level. Okay, genetic level में हमको variation देखना है तो polymorphism is the responsible one. इसमें बहुत explain कर सकती हूँ बेटा टाइम नहीं है इसलिए मैं ज्यादा explain नहीं कर रही हूँ ठीक है तो यहाँ पे repetitive DNA is the answer. Okay, because in DNA fingerprinting, it involves the identifying differences in some specific regions in the DNA sequence. That is because of repetitive DNA. ठीक है जो टैंडम रिपीट्स हैं वो देखो बेटा इधर 9 रिपीट होगा फिर उसमें 10 रिपीट्स होंगे इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग ओके दैट इज द इंडिविजुअल का डिफरेंस ओके सो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस तो थे बट वी आर नॉट लेफ्ट विथ मच टाइम सो नो प्रॉब्लम ओके I had kept 25 questions. We have successfully completed at least 20 to 21 questions. So not a big problem. I'm going to, yeah, Tinsukia, thank you so much. I'm going to launch the poll for feedback. Give me the feedback. What did you think about the class? I know I go a little bit faster. मुझे पता है कि मैं थोड़ा फास्ट जाती हूँ क्यों फास्ट जा रही हूँ बिकॉज देर इज अ रीजन दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर अपने चैप्टर को पढ़ा है मैं टीच कर रही होती हूँ ना तो मैं बहुत स्लो टीच करती हूँ यू माइट हैव स्टडीड मी टीचिंग यू नो सीन मी टीचिंग ऑल्सो तो बट अभी के लिए मैं आपको टीच नहीं कर रही थी हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर रहे थे आई वांटेड टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल इसीलिए थोड़ा फास्ट जाना पड़ा ओके थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक आई एम एंडिंग द पोल यू कैन लीव द क्लास थैंक यू सो मच थैंक यू कर्नूल थैंक यू सो मच बाय श्वेता बाय लाइश्राम थैंक यू नलगुंडा बाय श्वेता रोशनी थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास टेक केयर एवरीवन बाय you can join to the next class